I think the Gone Game जैसी script या concept जब आता है, I think instinct and gut is so important in everything that you do. I think a larger than life experience for us. It was not just lockdown में show करना. It was a life lesson of sorts to do this. आप कैसे देखती हैं रिया का जो ये मीडिया ट्रायल हो रहा है? ना मैं पर्सनली सुशांत को जानती थी, मेरी ट्विटर पे बात हुई थी उनसे एक बार, वेर आई इनवाइटेड हिम फॉर अ स्क्रीनिंग एंड ही विश्ड मी ऑल द लक. दैट में आई थिंक वो एक फीलिंग भी आई है that we are all connected, we all have to face this together. क्रू कौन है, जब निखिल से बात हुई, who is the director of the show, तो एक बहुत ही we felt very assured कि अच्छा we are in safe hands. So Shriya and Shweta, a pleasure having you with us on Bollywood Hungama. Thank you. Thank you. I think you guys are a few of the very, very rare species in Bollywood who have made yourselves useful during lockdown by actually doing something. Yeah. So congratulations for that. I think that's a great thing to do. So how did the Gone Game happen? And I read that Shriya is saying that she had to become a one-woman army for all of us. All of us. All of you. Yeah. So tell us the experience, how you got it, and how was it like? Shweta, want to go first? नहीं, आप चालू करो. To be honest, the Gone Game came to us at a time when we had no idea, when we would get back onto a set, and everything was just so uncertain. So for all of us, I think it was initially just the excitement of doing some work, and we lucked out because we enjoyed the script so much. A very, very well written show. And for us as actors, it was not just about doing anything that's coming our way. It was about doing a good show that people would like, whether it was the pandemic or not, lockdown or not. That's secondary. We wanted to just be part of a good show. And of course, when we found out who the cast is, we were all really happy. And we knew that it would be a huge challenge to manage things yourself. But at that point, just because we had so much hunger to do work, we went into it with like a sense of curiosity and wanting to experiment, and also willingness to make mistakes. We knew it was an experiment, but we also knew we would learn along the way. And now we're just so happy because when we saw the whole product, I think we all pat ourselves on our back saying, well done, you managed. No, I think you guys should. So I think the Gone Game जैसी script या concept जब आता है, I think instinct and gut is so important in everything that you do. And वही हमारे साथ हुआ कि like Shriya said कि lockdown or no lockdown, it's very important कि जो भी आप काम कर रहे हो वो आपको excite करे. And यहाँ पे सबसे ज्यादा वही excitement था कि एक तो जब concept अच्छा लगा कि अरे वाह मतलब इतनी जल्दी उन्होंने इतना relevant चीज जो दुनिया में बाहर हो रही है वही हम अपने घर पे भी दिखा रहे हैं. एंड जब पता चला कि कास्ट क्या है, क्रू कौन है, जब निखिल से बात हुई, हु इज द डायरेक्टर ऑफ द शो, तो एक बहुत ही वी फेल्ट वेरी अश्योर्ड कि अच्छा वी आर इन सेफ हैंड्स. इवन दो हम सब कुछ अपने आप मैनेज करने वाले हैं, फ्रॉम आर्ट डिपार्टमेंट टू कॉस्ट्यूम्स टू मेकअप टू वो मतलब पीछे कोई प्रॉप ठीक करना हो या प्रॉप लाना हो. सो वी न्यू इट्स गोना बी अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस. एंड आई एम श्योर आई एम सेइंग दिस फॉर ऑल द एक्टर्स कि पहले भी बाकी सारे डिपार्टमेंट्स के लिए रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा थी, लेकिन ये करने के बाद तो all of us have really thanked all the departments, and in fact now that we are going back to shoot, तो वो अच्छा लगता है कि अभी हमें सिर्फ अपना डिपार्टमेंट संभालना है जो कि परफॉर्मेंस इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड बिहाइंड द कैमरा, लेकिन जो क्रू होता है वो बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है. And Faridoon, actors are always put on some kind of pedestal, right? Because we're the face of the work that we do. But it's only when you're in a position of having to take up so many other responsibilities that you realize that actors are nothing without our technicians, without our spot dadas, without our core team, because all of their effort is instrumental in that one shot. And although we know these things, it's only when you're on field that you suddenly realize the responsibility you have, because you're not just acting. In the back of your mind, you're wondering, acha, hair makeup theek hai, continuity, like Shweta said, all of those elements come together. So it was, I think, a larger than life experience for us. It was not just lockdown mein show karna, it was a life lesson of sorts to do this. Absolutely. So you spoke about this. You want to say something?
हाँ नहीं कि मतलब जैसे आई थिंक लॉकडाउन में ऑलमोस्ट ऑफ अस एक वो ग्रेटिट्यूड आ गया है टुवर्ड्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, वी फील वेरी ब्लेस्ड। आई थिंक तो ये द गॉन गेम शूट करने के टाइम भी वही हुआ है कि मतलब जो पहले से ही पता था, जैसे इवन डेटा ट्रांसफर करना, जो कि लगता है कि डेटा ट्रांसफर करने तो कितनी मतलब बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है, लेकिन आप जो पूरा शूट करते हो और वो कैमरे से निकाल के कोई लैपटॉप में डाल के हार्ड डिस्क में डालता है, मतलब हैट्स ऑफ टू ईच एंड एवरी पर्सन, बिकॉज वो इतना इंपॉर्टेंट काम है। अगर गलती से कुछ फुटेज नहीं ट्रांसफर हुआ या कुछ करप्ट हो गया, आई कांट इवन इमेजिन मतलब क्या बैंड बजती होगी। तो जब No, पूरे no, ही हम absolutely. 10 घंटे के बाद जब खुद ट्रांसफर करना होता था तो लगता था हाँ काश कोई हेल्प कर देता। एंड थैंक्स टू आवर No, डायरेक्टर ट्रस्टेड अस विद दिस, क्योंकि या ये सब जो लॉकडाउन शूट्स, होम शूट्स का वो फंडा यही है कि वो ट्रस्ट और पेशेंस, दीज आर द ओनली टू थिंग्स यू नीड, इवन विदाउट वन yeah, यू नॉट एबल टू फंक्शन। no, absolutely. So आपने आपने स्पॉट दादा की आपने बात करी और हेयर एंड मेकअप की आपने बात करी एंड the respect I've grown for them. Now, लॉकडाउन में हुआ क्या है, बहुत सी स्टोरीज अभी तक सामने नहीं आई हैं. I think gradually maybe they will. The fact is, a lot of actors who are apparently doing very well, who are living in comfortable houses, but what people don't know is that they have EMIs to pay, and those are big EMIs. And when they're not having work because they get they function from project to project, so they're not getting, the money is not flowing in, and they have expenses that have to go out. Yeah. So that is a huge problem for a lot of people. A lot of people, they have not yet said it. Maybe at some point of time, a few people will. At the same time, now they are having stuff. जैसे आपने sport दादा हैं या फिर hair and makeup है. A lot of these people, they are not having work. उनकी families के पास में they are having a lot of trouble. And considering कि actors, like say you guys are actors, but the fact is that when actors are facing similar sort of issues that they're not having any work, how do they pay their staff, which they have been doing on a, so even they're not wrong, even the actors are not wrong, because nothing is coming in for them. It's a very sad situation considering the entire series is around lockdown. अगर आप इसके बारे में कुछ बात करना चाहेंगे, just to create awareness about this class of people, the sport dadas and the hair and makeup and all these things. You know, unfortunately, as we're seeing, every industry has been affected by the pandemic, and more so when you speak about a film industry, because we're all dependent on each other. You know, no matter how much we try and downsize a crew, it's still not enough, because literally everybody who's in that team is there for a reason, doing a particular job. And I know things are going to take a while before they get normal, but I just hope every actor is taking responsibility for their team, at least, you know, the people who they work with, because वही है goodwill जिससे चीजें आगे बढ़ती हैं. और अगर हम अपने ही लोगों का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर I don't know what we would define as success or happiness or responsibility. So compared to a lot of people who have gone back to their village, of course, us in Bombay, we're slightly in a better position, in a much better position, I would say. So I would just hope and pray that everybody is able to take responsibility for at least their team, to make sure that for whatever time they are taken care of, and hopefully you know, the unions or whatever the system is in place, I hope they're able to also have those funds in place to sort of allocate to people who've lost their jobs. Absolutely. You'd like to say something, Shweta? Yeah, कि thankfully for example Shriya and I, एक्टिंग में रेलेवेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इनफैक्ट मतलब जो एक्टर रेलेवेंट है, जिसका काम आ रहा है काइंड ऑफ, चाहे वो सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू हो या फिर और प्रोजेक्ट्स के थ्रू हो, वो एज एक्टर्स हमें कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स मिलते रहते हैं. प्रोजेक्ट्स इक्वल्स टू मनी. तो समथिंग दैट आई डू, दैट चाहे मुझे सोशल मीडिया का पोस्ट ही क्यों ना मिल रहा हो, मैं अ परसेंटेज ऑफ दैट आई गिव इट टू माय टीम. So it's not that difficult. I just want to tell all the actors who are earning, yes, you're doing it on your own. Yes, maybe you don't have a team right now who's helping you out. लेकिन आप जितना भी कर सकते हो ना, चाहे वो 1%, 2% या 10% हो, जितना भी हो या 20% हो, बट आप थोड़ा थोड़ा भी करोगे ना, every penny counts. तो आप कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये तो इतना कम है, इससे किसी को क्या फायदा होगा. आप करो. इनफैक्ट आप प्रोड्यूसर पर्सी, वो अपने मतलब किसी को बताती नहीं है, लेकिन वो उनके जो गार्ड्स हैं बिल्डिंग में या फिर जो सफाई करते हैं, शी यूज्ड टू कुक फॉर ऑल ऑफ दैम. सो चाहे अगर आप मे बी आप मनी नहीं दे पाओ,
लेकिन आप जो भी कर सकते हो, आई थिंक हम लोग को हमेशा लगता है कि लोग क्या कहेंगे या इतना कम होगा, नहीं यार, वो आप दिल खोल के किसी की हेल्प करना चाहोगे ना, तो सामने बहुत लोग हैं जिनको वो चाहिए। और इस पेंडेमिक में आई थिंक वो एक फीलिंग भी आई है दैट यू नो वी आर ऑल कनेक्टेड, वी ऑल हैव टू फेस दिस टुगेदर, you know, and which is why I think it's not just been these few months of lockdown have been a time of great introspection where hopefully as human beings we've realized that, you know, being kind, being I mean, not really having that much animosity and hatred in you, because is it really worth it? Is it really worth it, especially at a time like this? तो आई गेस ये सब सारी थॉट्स आते रहते हैं इन अ वे, यही एक अच्छी शायद बात है दैट्स कम आउट ऑफ द पैंडेमिक की होपफुली वी बिकम बेटर पीपल, होपफुली. सो द इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट सब इंडस्ट्रीज को अफेक्ट हुआ है, ऑब्वियसली हर किसी को अफेक्ट हुआ है, लेकिन द लास्ट maybe couple of months or so, the way the film industry is under attack, that is unprecedented as well. That has maybe never happened before. आपने बात करी कि वो animosity और hatred जो है वो दिल में नहीं हो, maybe शायद, but maybe some people are not agreeing with that, and the level of hatred that is coming out for the film industry, many feel that maybe it is unwarranted and unprecedented and too much. How do you guys look at it, this entire wave of negativity that is going on against the film industry? Is it that bad a place? मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि जैसे फॉर एग्जांपल जब स्टार्टिंग में लॉकडाउन जब थोड़ा ओपन हो रहा था, जो फर्स्ट स्टेज था ओपनिंग अप का, तो असेंशियल सर्विसेज में मतलब हम लोग तो दूर दूर तक कहीं थे ही नहीं, ठीक है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आई एम नॉट क्लेमिंग दैट हम एसेंशियल सर्विसेज हैं, बट आई जस्ट वुड लाइक टू बिलीव दैट एंटरटेनमेंट, चाहे आप कोई भी जॉब करते हो इस दुनिया में, एंटरटेनमेंट से कोई दूर नहीं रह सकता। आप कंज्यूम करोगे ही करोगे, आप नहीं करा आपके घर पे कोई कर रहा होगा, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो ऑनलाइन ओटीटी हो, चाहे वो फिल्म्स हो। सो आई थिंक जब गॉसिप करनी होती है या ये सब बातें करनी होती है, तो सब लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को वो अटैक करते हैं, बिकॉज एक तो एवरीबडी नोज एवरीबडी। मतलब अगर किसी लॉयर का कोई कहीं बात होगा तो इट्स नॉट सो मच फन, बिकॉज वो सिर्फ उतने लोग ही जानते होंगे। बट यहाँ पे एंड सबको वो एक आई थिंक आई रेड अ मीम समवेयर कि सबके व्हाट्सएप ग्रुप्स में केसेस सॉल्व हो चुके हैं, वर्डिक्ट मिल चुका है। तो व्हाइल आई अंडरस्टैंड दैट दिस माइट बी a lot of fun for people to talk about, but लोगों की जिंदगी है यार, मतलब हमारी, इनफैक्ट गॉड forbid, I keep hoping and praying that people that we care about and people that we love, forget people that actually, किसी के साथ भी ये नहीं होना चाहिए। and just because we are on your screens, that does not mean कि our life has to be made public or what we do। अब मैं क्या खाती हूँ, मैं क्या पीती हूँ, मैं किससे बात करती हूँ, ये किसी का बिजनेस नहीं है। हम सब कुछ करते हैं एज एक्टर्स, वी आर लिटरली पुटिंग आवर इमोशंस आउट देयर। फॉर द गॉन गेम, ऑल दी एक्टर्स, हमने अपना घर खोल दिया है। ये सब जो मेरा रूम है, जहाँ मैं बेड पे हूँ, जो मेरा किचन है, वी शोन एवरीथिंग दैट वाज आस्क्ड। तो आई थिंक थोड़ी तो रिस्पेक्ट, मतलब इतना प्यार मिलता है ऑडियंस से, but somewhere I feel that little more respect can be given to our industry. आप कैसे देखती हैं रिया का जो ये मीडिया ट्रायल हो रहा है, कैसे देखती हैं आप इसको? मैं एक्चुअली इतना एक वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो जाता है, बिकॉज आई डोंट थिंक लोग सोचते हैं बिना कुछ कमेंट करने से पहले। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि जैसे किसी ने पूछा था कि आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए, हमने हुआ है मैं ना, मैं पर्सनली सुशांत को जानती थी, मेरी ट्विटर पे बात हुई थी उनसे एक बार, वेर आई इनवाइटेड हिम फॉर अ स्क्रीनिंग एंड ही विश्ड मी ऑल द लक। अब उसके बेसिस पे आई मीन आई विश we performed better as human beings. So I think everybody has let each other down. And अभी जो वहां हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग का भी हो रहा है, जो कोविड का भी हो रहा है, there are so many battles. I feel like what Shriya was saying, प्यार बांटो यार, खुशी बांटो। If there's anything else, then support each other. Let's make the world a better place to live in.